বলার পরে আর এটা করব না, সরি। আচ্ছা, so the concept of electromagnetism, why am I giving so much importance on it? Because this is the reason we are enjoying our night lives. Lives মানে এই যে আলোগুলো দেখতে পাচ্ছ, it is because of this concept. নাহলে আমাদের লম্ব জেলেই থাকতে হতো, বা ওই ব্যাটারির আলোতে এত বেশি আলো প্রডিউস করা যেত না, ঠিক আছে? So the concept obviously dates back very early. By that time, the working of electromagnetism, means magnetism due to current electricity, was already done. Okay? But the concept that magnet can also produce current was still not in the show. So तब current कहाँ से produce होता था? Just chemical cells. Chemical cell में से जो acids react करके जो potential difference create करता है, उससे ही जो current produce होता है वही use करता था. Now that current is pretty low, बहुत low current होता था, और उससे हम लोग सिर्फ थोड़ा सा light ही create कर सकते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? Now there is a person, Faraday. She was a very renowned scientist during that time, and he used to put up his inventions or any type of discoveries into our science community, and used to come for some public lectures where everyone who is interested about the science can attend the lecture and can get to learn from it. Okay? Faraday was a very interested person in listening to these type of discussions. So Faraday used to attend all his lectures and used to take proper notes of the lectures and try to understand what Sir Faraday has to say. So once he approached Davy and said that he wants to work with him and he's very interested. But he didn't have any prior proper schooling. He was a carpenter's son and he used to bind books. And when binding books, he used to read the books and try to understand, and he had a lot of interest with the science. So Humphrey Davy said that you don't have proper schooling, you don't know anything about science, how can you work with me? So, hata diya usko. Okay? So next day, he came up with all the notes he made up out of Humphrey Davy's lectures. And Davy was so happy that ऐसे इससे पहले वो अपना notes भी उतना अच्छे से नहीं बनाया. So he was very happy and he recruited him as a lab assistant. So during some experimentation, due to some blast, Humphrey Davy lost his both eyes. And by that time, Faraday was so quick at picking up things that he was properly ready to take up the responsibility of his whole lab. During that time, already the magnetic field due to current was discovered. Ampere's law, Oster's law, everything was discovered. So everyone was quite working with the amount of magnetic field created by current carrying one. Faraday had a totally different perception. He told that if a current carrying wire can create magnetic field, why not the other way around is possible? That means magnetic field creating current. But you know, thinking is easy, doing is real difficult. So he tried all his methods possible but couldn't prove this anyway. Okay. And due to frustration, once he threw a magnet and suddenly found that the galvanometer was reflecting. So most of the genuine inventions or discoveries are accidental. Okay. So accidentally he discovered something which is giving all our night lives. क्यों? क्योंकि इतना जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग नाइट को यूज करते हैं वो पॉसिबल नहीं होता अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती. The amount of electricity we consume today, about 98% of that
comes from electromagnetic induction, EMI, electromagnetic induction से आता है, ठीक है. So what was the concept? First, what Faraday thought is that a current carrying wire produces magnetic field. So उसने क्या किया, एक बार मैग्नेट को रख दिया इसके पास, एक लूप के पास, और try to figure out कि current produce होता है या नहीं. So he used all possible ways of big magnet, small magnet, placing it inside, placing it outside, placing nearby, everywhere, but it didn't work. So when he threw the magnet through the conducting loop, he found the galvanometer deflect. That means a stationary magnet does not produce current, but a moving magnet does. So उससे पहले वो स्टेशनरी मैग्नेट रख के बहुत बार ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गुस्सा से मैग्नेटिक फील्ड, गुस्सा से मैग्नेट को थ्रो कर दिया, तब देखा कि वो करंट डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है. सो दैट इज वेयर ही फर्स्ट केम टू his conceptual proving that a current carrying wire, a current can also be produced using a magnet. केमिकल सेल से करंट प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, मैग्नेट से भी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. सो he put up two theories, two very important laws. Write this down. Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction. Yeah. So, first law. Before we do the first law, एक छोटा सा चीज हम लोग को सीख लेना है. That is magnetic flux. You know what is magnetic flux? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, field number of field lines passing through a particular area, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम लोग सेम तरीके से निकाल सकते हैं, सिर्फ फाई के नीचे एक छोटा सा बी यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखे थे, तो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई ई यूज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फाई बी यूज करेंगे. सो फाई बी क्या होगा? फाई बी विल बी बी डॉट ए या बी डॉट एस. सो ऑब्वियसली वहां पर ई डॉट ए था या ई डॉट एस था, और यहाँ पर बी डॉट ए है. So सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह में मैग्नेटिक फील्ड आएगा और कोई डिफरेंस नहीं. So obviously this will be BA cos theta, और मैग्नेटिक फ्लक्स का एक यूनिट है. क्या यूनिट है मालूम है तुम लोग को? क्या? वेबर, राइट. वेबर, इसको इन शॉर्ट W भी लिखते हैं. वेबर इज द SI यूनिट. SI यूनिट Tesla meter square. Weber is equal to Tesla meter square. Weber is equal to Tesla meter square. This is magnetic flux. ठीक है? So magnetic flux क्या होता है समझ में आया सब लोगों को? Now the first law. First law क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि there will be some current induced in a conducting loop if some change in magnetic flux is linked with it. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी कंडक्टिंग लूप अगर रहेगा, कंडक्टिंग लूप क्यों चाहिए हम लोग को? व्हाई वी नीड अ कंडक्टिंग लूप? बिकॉज इट नीड्स टू क्रिएट अ क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट नहीं होगा तो करंट फ्लो. इज दैट क्लियर? तो एक कंडक्टिंग लूप के अंदर से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास कर रहा है वो चेंज करेगा. क्या करेगा? राइट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. रिमेंबर, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बोला हुआ है. एक कंडक्टिंग लूप के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक रहेगा तो वहां पर करंट प्रोड्यूस होगा ऐसा जरूरी
लेकिन अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है तभी उस कंडक्टिंग लूप में करंट प्रोड्यूस होगा. Is that clear? And the second one says the rate of change of magnetic flux is directly proportional to the induced EMF or current. अच्छा এখানে না কারেন্ট ইনডিউস না লিখে না ইএমএফ ইনডিউস লিখো না একটুখানি, এটা একটু ভুল হয়েছে. কারেন্ট ইনডিউস না লিখে ইএমএফ লিখো. হ্যাঁ, কারেন্ট ইনডিউস না লিখে ইএমএফ লিখো. So first statement says that whenever there is some magnetic flux change is linked to a conducting loop, it will produce some induced EMF, and the induced EMF is directly proportional to the what? Rate of change of magnetic flux. So this is the qualitative linkage of magnetic flux and EMF, and this is the quantitative linkage. Quantitative means where we can measure. So measure means we can pick a formula. So what is the formula we can make out of it? Induced EMF is proportional to d phi b dt. Right? EMF is proportional to d phi b dt. The length is. EMF is proportional to d phi b dt. Is that clear? And you all know that whenever we are discussing about EMF or current, that happens generally in a specific direction. Means EMF has a positive negative sense as well as current also have a positive negative sense. मतलब यहाँ पे एक directional sense भी attached है. So Faraday didn't give a directional sense direct away. The directional sense was given much properly by Lenz. ठीक है? So Lenz's law टा बोलबो, प्रथमे Faraday's law टा लिखना चटपट.